It is perhaps the newest department of Congress Party, and it was launched on 16th November 2017. So this year on 16th November 2021, we will be celebrating fourth Foundation Day. देखिए, मैं यदि गोवा को मैं बाहरी के निगाह से देख रहा हूँ तो यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत है और पोटेंशियल भी है। टूरिज़्म हो भी बहुत रहा है और पोटेंशियल भी है, और मैं पर्सनली फील करता हूँ और हमारा डिपार्टमेंट का यही कोशिश है कि इस जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंटीग्रेट करना चाहिए, है ना। जैसे मैं अपने फैमिली के साथ आया हूँ, मेरी बेटी बोली थी यार दिल्ली हाट जैसा कोई आर्टिजन्स का जगह नहीं है, शी वांटेड टू गो टू सच प्लेस, है ना। तो हम जब कोई टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट को क्या हम आर्टिजन्स को अपना शोकेस नहीं कर सकते हैं, जहाँ टूरिस्ट जो है आर्टिजन्स का सामान खरीदे। हम अपने मार्केट्स में स्ट्रीट वेंडर्स के मार्केट्स जो ट्रेडिशनल हेरिटेज मार्केट्स है वहाँ पे हम टूरिज़्म नहीं करा सकते। बहुत अच्छा से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लोग केवल बड़े रेस्टोरेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। हम गोवन लोकल फूड का स्ट्रीट फूड वेंडर्स के थ्रू क्यों नहीं सेल करा सकते हैं, हम फूड स्ट्रीट क्यों नहीं बना सकते हैं यहाँ पे। So that is what our department stands for, that the opportunities that are being created, whether it is through tourism, whether it is through urbanism, whether through any other, whatever opportunities are being created, such opportunities should be integrated. The unorganized workers should be integrated with these opportunities. I'll give you one example. Today morning, a journalist from Delhi had rung up and he was telling me that these common service centers, now they are trying to integrate common service centers with telemedicine. They have a proposal and it is at a very advanced stage, and people will be they are going to hire some companies and they will train that. I suggested that that if you are going to integrate telemedicine, then why not give I don't know in Goa they are or not, but in 99% of India, I have seen Jhola Chhap doctors, that the local ones, and they provide the first help. So why not integrate them into telemedicine rather than you create a new brigade and have conflict with that, So livelihood for the unorganized sector, we feel, should be strongly integrated with tourism in Goa, and there are immense potential. And if Congress party comes to power, I promise you that we'll get all these new ideas integrated into this, into tourism, whether it is creating hearts for artisans, whether it is creating street food of Goan, for street food vendors of Goa, and all new ideas, whether it is like village tourism, so all new kind of ideas should be, so that the common people are able to make use of. Not only people who have money. People who have money will make money wherever but it is for the government to take care of the vulnerable, the unorganized, people who are disempowered, people who are marginalized. है कि हम लोग गोवा में बहुत कुछ नहीं कर पाए, हमारा इसी आने का उद्देश्य यही है कि हम गोवा में बहुत जल्दी से हम चाहते हैं कि संगठन यहाँ पे खड़ा कर सके, ताकि गोवा के जो मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, उनको भी मदद मिल सके। थैंक यू। तो गोवा में असंगठित क्षेत्र जो है वो काफ़ी तादाद पे उनके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, और हमारा जो असंगठित सेक्टर है उसमें दो कैटेगरीज पड़ते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल गोवन प्रोफेशंस हैं, जैसे कि हमारे रापोणकर हो गए, हमारे जो खजान के बंद को रिपेयर करते हैं वो हो गए, हमारी मेड्स हो गई, ये सारे, और पायलट्स हो गए, ये एग्जाम्पल्स हैं असंगठित वर्कर्स के। तो जो 69 ट्रेडिशनल हमारे प्रोफेशंस हैं अंडर द गोवन ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, वी वुड लाइक टू रेज इश्यूज फॉर देम as well as the other modern professions which fall under the unorganized sector in Goa. So we have started with appointing 2 presidents of 2 different blocks in Goa. Launched a COVID scheme for the unorganized sector, and in that, in Schedule A, they listed 69 traditional Goan occupations. In Schedule B, C and D, they listed another 10 occupations. And they have mentioned that they will give a one-time settlement of 5,000 rupees
There is no time stipulation, no time duration as to whether this is going to be a monthly amount. Nothing is mentioned. So if you say 5,000 rupees as a one-time settlement, ये एक भद्दा मजाक है. This is a serious joke that is being done with the unorganized workers in Goa, and it doesn't stop there. To get access to this particular scheme, you have to go first take the signature of the panchayat secretary. Then after that you have to go and prove with your identity. First of all, if the worker will have the proof of their profession or not, that is questionable. Then they have to get signature of the panchayat secretary. After that you have to go to the district committee, where again you have to get approval from there. So this is the situation that the government of Goa has put unorganized workers into, that they have to run from office to office to gain access to just 5,000 rupees as a one-time settlement. I think there cannot be any bigger joke than this, that the BJP government can play with the people of Goa, especially the unorganized sector. And we will not stand for this. And this is exactly what we are going to do going forward. We are going to expose these bad jokes that the BJP government likes to play with the unorganized workers especially. Thank you so much. So what help will you suggest? How much you mean to say how much they should get? जेणी हे इनिशिएटीव घेतले गोंयान जे अनऑर्गनायज सेक्टराक लागून ब्लॉक प्रेसिडेंट्स अपॉइंट केल्यात. आतां आमचे फक्त 5-6 जाण अपॉइंट केल्ले आसात. इन शॉर्टली सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अपॉइंट केले जातले. तुमकां खबर आसा की अनऑर्गनायज सेक्टर तितूर मोटरसायकल पायलट्स येतात. आमचे मोटरसायकल पायलट्स येतात पळयात, ते पावसान हुंतान अशें बाबा ओपन हितूर रावन ते आपणाचो बिझनस करतात. फॅमिलीक तांकां चलोवपाक जाय म्हणून तांकां एक प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं. फॉर एग्जाम्पल तांकां एक बारीकशी शेड दिली आनी प्रॉपर वॉशरूम बीन दिलो जाल्यार एक हेल्पफूल जातलें तांकां. कारण इट अशें हुंतान बीन रावन तेजे हेल्थाचेर इफेक्ट जातात. सिमिलरली टॅक्सी ड्रायव्हर बीन आसात पळय, तेंचे इश्यूज आसात. ते सपोज फॉर एग्जाम्पल खंयचे हॉटेल आसात, त्या हॉटेलाच्या भायर खंयतरी खंय रावतात आनी आपणाचो बिझनस करतात. तांकां सुद्दां एक प्रॉपर जागा आयडेंटिफाय करून तांकां प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय. फीश वेंडर आसा, आतां फीश मार्केटान जर वयशीत पॅथेटीक कंडिशन आसतात, अनहायजिनीक कंडिशनान ती बाबा बायलां वेजिटेबल वेंडर जे आसतात पळय ती आपणाची बिझनस करतात. सो हे इश्यूज जे आसात पळय ते आमी AIUWCच्या थ्रू हायलायट करतले पर्टिक्युलर गव्हर्मेंट एजन्सीक आनी तांकां एक बरो सपोर्ट दिवपाचे प्रयत्न करतले. वेजिटेबल वेंडर्स आतां ते म्हणटा सिजनल आसतात पळय, ते हायवेचेर बीन खंय बाबडे बसतात आनी बिझनस करतात. तांकां सुद्दां एक प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक टेम्पररी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्दां आसपाक जावं अशें आमचें मत आसा. आतां आमी स्लोली डोर टू डोर वचोन एक डेटाबेस तयार करतली अनऑर्गनायज सेक्टर जे लोक आहात पळय. कारण आमचे कडेन आतां आमी वी टॉक इन द एअर म्हणटा तशें आमचे कडेन तसो डेटाबेस कांयच ना. तो घरोघरी वचून डेटाबेस तयार करतले, तेंचे इश्यूज जे कितें आसा पळय ते हायलायट लिस्ट आउट करतले आनी तांकां हेल्प लायक थ्रू अवेरनेस कॅम्प्स जावं खंयतरी स्किम्स आसात थ्रू एट पर्टिक्युलर स्ट्रेटेजीक लोकेशनार जावं पंचायत बोर्ड हेतूर बीन व्हरून म्हणजे तशें आमी एक अवेरनेस कॅम्प्स बीन एक ऑर्गनायज करतली. इतकें सांगून हांव म्हणटा की आज परत एकदां थँक्यू म्हणटा आमचे चेअरमॅन सर आनी मॅडमींक की ही इनिशिएटीव घेतले आनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या तेंच्यांनी. हे अनऑर्गनायज सेक्टराक कितें तरी आमी काम करतले आनी तेंचो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग जो आसा पळय तो इम्प्रूव करपाचे आमी प्रयत्न करतले. देव बरें.